continents in the world. See, the most important we are here to learn tourism. So most important thing is we should always focus on those continents where people travel. जहाँ पे लोग ज़्यादा घूमने फिरने जाते हैं, उन जगहों पे हम ज़्यादा, उन कॉन्टिनेंट्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे. हम वाटर बॉडीज के बारे में भी बात करेंगे यहाँ पर. On the top, you have North America, Canada, USA, Mexico, and some of the Central American countries also come under North America. ज़्यादा ट्रैवल किस साइड है? कनाडा, यूएसए, बहुत ट्रैवल है. For all the travel students, it is important to keep your focus on Canada and United States of America. Next comes the South America, which is Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Brazil, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay. So these are the South American countries. Again, South America में travel काफी कम है. पता जरूर होना चाहिए बिकॉज इंटरव्यू में आपसे किसी भी तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. बट इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपना फोकस फिर भी उस जगह रखिए जहां पे लोग ट्रैवल करते हैं. सो दिस इज साउथ अमेरिका. देन यू हैव यूरोप हियर. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट फ्रॉम ट्रैवल पॉइंट ऑफ व्यू. लॉट ऑफ पीपल ट्रैवल टू यूरोप एंड हियर इफ यू सी वहां पे क्योंकि यूरोप पूरा दिखाया नहीं जा सकता तो नीचे उन्होंने एनलार्ज किया हुआ है. यू हैव ऑल दीज कंट्रीज, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, बेलारूस, यूक्रेन, इटली. So all these countries form a part of Europe, which is just over Africa. Below there you have Africa here. You have Algeria, Libya, Egypt, Eritrea, Ethiopia, Somalia. This part belongs to the Eastern Africa. This part belongs to the Western Africa. And if you look at this, you can see Africa is just below Europe. Africa is just below Europe, and you can see some of the islands also here: Madagascar, Mauritius, Seychelles. Then here you have Russia, China, India, which are a part of Asia till Indonesia, and you have Australia here, which is a separate continent. So we have 6 continents. We discussed 6 continents where travel, but there's more travel in North America, lesser travel in South America. Europe is very important from travel point of view. Africa is, again, travel is less travel is scarce. एशिया में ट्रैवल बहुत है, ऑस्ट्रेलिया में भी है. उनको आप डिस्कस भी किया जाएगा कि कौन सी सिटीज इंपॉर्टेंट है जहां लोग ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करते हैं. और नीचे एंटार्क्टिका है, वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि लोग यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर पाते बिकॉज यू हैव टू बी लाइक सुपर फिट टू बी एबल टू ट्रैवल टू दिस कॉन्टिनेंट. एंटार्क्टिका नॉर्मल ह्यूमंस नहीं ट्रैवल करते. यहाँ पे रिसर्च के लिए लोग जाते हैं बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ पोलर आइस हियर ऑन द टॉप ऑल्सो हियर. सो इट्स नॉट वायबल फॉर अस people, common people like us to go to Antarctica. Okay, so IATA is a body which stands for International Air Transport Association, which has divided the world into 3 conference areas, traffic conference areas, to make us to make things more understandable. Now, traffic conference area number 1, you have North America and South America. Traffic conference area number 2 is Europe and Africa and Middle East. So Middle East is not a continent, it is a part of continent, and that area has been given a name as Middle East. Okay, and then you have rest of Asia. Now you understand why do I call it rest of Asia, because Middle East, which is a part of Asia, comes under TC2 and TC3 में आपका रशिया में भी आपका बाइफिकेशन हो जाता है. रशिया का लेफ्ट हैंड साइड
यहाँ पे यूरल माउंटेन्स कहीं है, तो इस साइड वाला पार्ट जो है आपका TC2 में आएगा और राइट हैंड साइड वाला पार्ट जो है वो आपका TC3 में आएगा. सो बेसिकली यू हैव रेस्ट ऑफ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया अंडर TC3. सो ये हम जो राउटिंग समझते हैं, राउटिंग को समझा जाता है क्योंकि राउटिंग्स का सीधा कनेक्शन फेयर से होता है, तो उसको अच्छे से समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको कॉन्फ्लिक्ट एरिया समझ में आए. होप आई मेड थिंग्स इजियर फॉर यू. कुछ आगे के क्लासेस में हम ये भी देखेंगे कि मैप्स कैसे पढ़े जाते हैं. जैसे इजियर वे टू लर्न मैप्स. फॉर एग्जाम्पल, जब आप मैप्स पढ़ते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपने बाउंड्रीज को स्टडी करना है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, कनाडा की बाउंड्री जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बाउंड्री को टच कर रही है. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मेक्सिको की बाउंड्री एक दूसरे को टच कर रही है. ठीक है. आप जब कंट्रीज को, छोटे छोटे कंट्रीज को लर्न करते हैं तो पे अटेंशन टू हाउ दैट कंट्री लुक्स लाइक एंड वो कौन से नेक्स्ट कंट्री के साथ अटैच्ड है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ग्वाटेमाला, you can see Honduras. Then on the left hand side you can see a small country, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama. That's how you're supposed to learn it. Cuba, Jamaica. अब आपको समझ में आना चाहिए कि क्यूबा की शेप कैसी है, जमाइका कैसा दिखता है, ग्रेनाडा कहाँ है. So these things are very important. जब आप साउथ अमेरिका लर्न कर रहे हैं, so try and learn it in a sequence. Ecuador, Colombia, Venezuela. But pay attention to how these countries also look like. So that would make your map work a lot more easier. I hope you like this session. Do follow us for more.